आ गया Bangalore, started exploring, and first thing, like, I can go for hours to I talk know. about each chain because it's अपने में unique है, अपने ना अतरंगी है Atrangi, Cosmos yeah. ecosystem coming ahead. I saw something on your. What's happening? All right. Thank you so much, Abhitej, for joining me and taking my request on doing this podcast. So, हमारे साथ Abhitej हैं, and you are from Persistence. I think Persistence is one of the product or protocol we will get to know from you, building on Cosmos, correct? And basically, मैं काफी curious था Cosmos को लेके. The first time I made this video on Cosmos, I was blown away because I heard कि जो Binance chain है and all these different chains like even CRO chains, they're all using Cosmos SDK, right? Yeah. So that was my first introduction, and then I also got to know that a lot of protocols on Cosmos which will be connected through IBC. So this was Yeah. a while ago, and it's been a while. So I was very curious on what is being built on Cosmos right now. So I thought let's connect with you, Abhitej. So let's get into it. Can you give us like a, so you are a CEO at Persistence, is that right? No. So I currently take care of the marketing and strategy, and have been part of the team since the day zero. Tushar Agarwal is the CEO of Persistence. I think I met him. I met him at. I think we have spoken quite a few times, but in 2018 or 2017, I think that was very early stage. Tushar, he was in Singapore. Yeah. I'm not sure which part of the world he is right now. Is he still in Yeah, Singapore? still in Singapore. I love Singapore. And that's like, Singapore and Dubai are the places to be if you really want to like try out things. That's like. So let's start with the small intro with you of yours, Abhitej. Like, who are you? Like, how did you get into crypto? What was your life before crypto? And when was your first introduction to Bitcoin? And what got you into this space? Sure. So, like, बड़े होते होते I wanted to an army officer, but वो हो नहीं पाया, तो आपने बोला कि engineering करनी पड़ेगी, and I didn't want to do engineering. I wanted to do literature. So VIT पहुंचा. So VIT Vellore, Tamil Nadu. So started like अब 4 साल तो गुजारने ऐसे like punishment ना हो. So started getting involved a lot, startups में, because that was like my keen interest in terms of like organizational growth or building like teams from scratch, doing like big initiatives. So काफी सारे hackathons start किए, Code to Create को found किया, और like different students के लिए different initiatives start किए, and उससे क्या हुआ कि बहुत सारे startups के साथ exposure मिल गया बहुत early stage of life में, and 2017 most of the time US में spend किया, जहाँ पे like realize हुआ कि okay, बहुत सारे लोग डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग पे फोकस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स पे फोकस कर रहे हैं, वहां से लाइक बिटकॉइन के बारे में काफी पता चला, बिकॉज हार्वर्ड में था, फिर यूपेन में था, और वहां पे बहुत सारे लोग जस्ट बिटकॉइन अभी पिकअप कर रहा था, एंड वो स्पाइक आने वाला था, तो बात करें, सो आई इन्वेस्टेड जेप्पे में. Unfortunately it didn't end up well, but so 2017 when I bought and lost all that money in Bitcoin, so you have put all your earnings in from startups, और जब आप स्टूडेंट होते हो तो हर like हजार दो हजार पे बहुत बड़ी बात. So I had put all of that together because my friends used to get all their payments in Bitcoins because they were used to work with teams that are across the world. So Bitcoin was the easiest remittance way. And so वहां पे जब लॉस हुआ तो सोचा कि अब ये स्टेप बैक कर लेते हैं, स्टार्टअप वेब टू स्टार्टअप ही ठीक है, बिकॉज यू अंडरस्टैंड. बट 2018 में वन ऑफ माय सीनियर्स इनवाइटेड मी, वॉक मी थ्रू टेक्नोलॉजी साइड ऑफ थिंग्स, लाइक इथेरियम, पूरा बिटकॉइन नेटवर्क समझाया, इथेरियम समझाया, and that really got me hooked. And I went back and like started working on Solidity. So through that, like 2018 just experimented later half, and 2019 got a chance to say, hey, do you want to jump into crypto? And मैं Bangalore, like मैंने कोई job नहीं ली, college में placements में नहीं बैठा, and I picked up my stuff and landed up in Bangalore. And I didn't know if I would complete my degree or not, because college ने बोला कि it's not an internship that is by college or stuff. So
आ गया बैंगलोर, started exploring, and first thing, like आप जैसे बोल रहे हो, like I have been always fascinated about the fact, like how do you make this, like इंटरनेट जब स्टार्ट हुआ था तो जैसे ARPANET हमने बात किया है, एंड देन हाउ एवोल्यूशन हैपेंड, एंड देन हाउ इंटरनेट टू बट द सेम वे, लाइक इथेरियम एक्सप्लोर कर लिया था, बट कॉस्मोस जैसे जो कॉन्सेप्ट था कॉस्मोस का, वो itself was very fascinating कि you're in, like interchain communication होगी, it's like HTTP, आप like today वेबसाइट्स हैं सारी HTTP से connected, एक प्रोटोकॉल है पीछे, and this was very exciting to me. So very early on, abhi Cosmos is not like, it's just launching, and got exposure to Cosmos. So it's like you could say was among the earliest people to know about Cosmos or explore Cosmos. And then yes, since then, like started Cosmos India, which is the local community for Cosmos, and with support of like, so Tushar, Nipanshu, multiple other folks that were in the circle were very helpful, and these guys like helped a lot to learn about Cosmos also. So Tushar used to fly in from Singapore, he was attending a lot of conferences, and I used to meet him, and the vision that he had with Cosmos as well was very fascinating, and I was like, probably at that stage I was like, so he was a VC, right? So he already had a lot of exposure to crypto. He already knew, understood it. So that's where like the interest grew, and that's where persistence started taking shape in 2019. And I was still a kid, right? College kid who got this chance to be in the space very early on. And for me, these people felt like, I'm sitting with Mark Zuckerberg and Sergey Bryant and Larry Page of this. And this is like Polygon's team is there in Bangalore. Now Persistence is there, and there's Arcana. So I'm meeting all these folks, and it felt like so nice as a college student. But yeah, like fast forward 3 years of being building like in Cosmos, in like with Persistence, or I never look back. I always feel like there's like more exciting things every day. Like I keep on like finding new ways to learn things. There's like always, and especially like now Ethereum moving to proof of stake has been like, this was our biggest bet. So like in 2019, nobody felt like proof of stake will take off, because everyone felt as key security bahut bada reason hai, like chains, proof of stake chains nahi kaam karengi. But that was a bet we won't take. And I can just briefly tell like the ups and downs we have gone building persistence and betting on proof of stake. When we started in 2019, it was just understanding proof of stake. Then 2020, COVID hit. We were not even able to raise capital. And then you're going through all those challenges, and it was like, ideas that from Tushar that actually sustained the like in these difficult times. So we started running validator nodes, which got us more invested into proof of stake. And then that bet led to like, now when you think, like you talk about proof of stake, everyone is excited. Everyone wants to know what is staking. Everyone wants to know what is liquid staking. And yeah, so I mean, this is journey, and this is how I got into persistence. To quickly cover persistence पे क्या करते हैं हम? So persistence का major focus यही है, like proof of stake के लिए more efficient solutions बनाना है. So हम staking और liquid staking पे focus करते हैं. So persistence क्या बना रहा है कि liquid staking क्या होता है कि आप जनरली जब स्टेक करते हो अपने एसेट्स किसी भी प्रूफ ऑफ चेन स्टेक चेन पे, तो वो लॉक हो जाते हैं. आपको एक सर्टेन लाइक ये फिक्स डिपॉजिट की तरह, बैंक में जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है, आपने पैसे डाल दिए तो आप 6 महीने तक नहीं निकाल सकते हो, ऐसे प्रूफ ऑफ स्टेक पे होता है, एंड उससे नेटवर्क सिक्योर होता है. पर अब प्रॉब्लम क्या है कि अब बहुत सारे लोग स्टेक ही नहीं करते हैं अपने एसेट्स, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है, एंड और इसलिए वो और नेटवर्क की सिक्योरिटी उससे हर्ट होती है, राइट? जब ज्यादा, एंड जैसे प्रूफ ऑफ स्टेक पे डीफाई बनेगा, जैसे इथेरियम पे था, अगर आपके पास लिक्विड एसेट्स नहीं है तो लोग वो डीफाई में यूज नहीं कर पाएंगे. तो ये मेजर गैप हो जाता है, चैलेंज हो जाता है. एंड इसी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक तरीके से आप सोच रहे हैं, एक मिडल वेयर है, वो है लिक्विड स्टेकिंग. लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल्स क्या अलाउ करते हैं कि आप स्टेक करते हैं जब आप अपने एसेट, तो आपको एक स्टेक रिप्रेजेंटेटिव दे देते हैं. वो कुछ नहीं है बड़ा, एक तरीके की आपकी रिसिप्ट है जो आप अब डीफाई में यूज कर सकते हो. आप अपने इंटरेस्ट लाइक व्हाटएवर स्टेकिंग रिवॉर्ड्स जो आपको हैं वो तो मिल ही रहे हैं, पर उसके अलावा आप जाके उसको डीफाई एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं. जैसे कि आप यूनिस्वैप में चले गए और आपने पूल में डाल दिया अपने एसेट, जैसे ST ETH है या STK ETH है,
जो pStake का इथेरियम लिक्विड स्टेकिंग एसेट है, आपने पूल में डाल दिया, अब आपको पूल रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं, आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं, सो आप अपनी ग्रो कर सकते हो और रिडेम्पशन बहुत आसान हो जाता है। अगर आपको उस पोजीशन से मूव आउट करना है तो बिना बिना अनस्टेक करे, विच इज मैंने वो बोला कि आप पीरियड जो आपको वेट करना पड़ता है अपने एसेट निकालने के लिए जिसमें आप कोई रिवॉर्ड्स नहीं अर्न कर रहे हो, वो भी चले जाता है। सो दिस इज वो हम परसिस्टेंस पे करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अभी सो pStake जो हमारा लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल है वो बाइनेंस पे लाइव है, वन ऑफ द बिगेस्ट सॉल्यूशंस फॉर बाइनेंस। कॉस्मोस पे सबसे बड़ा लिक्विड स्टेकिंग सोल्यूशन है। एंड नाउ अब हम परसिस्टेंस के ऊपर लॉन्च कर रहे हैं। पहले जो सोल्यूशन था वो इथेरियम साइड पे था, बड़ा परसिस्टेंस पे लॉन्च कर रहे हैं। We have launched on Ethereum, and we have for persistence, and then we have Solana and Avalanche in the pipeline. And अब हमारा broader vision यहाँ से है कि हम इसके अराउंड जो है यूटिलिटीज बनाए मल्टीपल टीम्स के साथ काम करके। और ये यूटिलिटीज ऐसे हैं कि आपके पास एक डेक्स है, आपके पास मनी मार्केट्स है, ऑप्शन मार्केट्स हैं, जो कि क्लियरली सिर्फ यील्ड बेयरिंग एसेट्स के लिए हैं, राइट? क्योंकि सिंस ये यील्ड बेयरिंग एसेट्स हैं, इनकी वैल्यू इंक्रीज होती रहती है ओवर टाइम। सो एक एसटीके, फॉर एग्जांपल एसटीके ईथ ले लेते हैं और ईथ ले लेते हैं, एसटीके ईथ की वैल्यू बढ़ती जाएगी टाइम के साथ क्योंकि स्टेकिंग रिवॉर्ड्स बढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या है कि आप बहुत इंटरेस्टिंग यूज केसेस भी बना सकते हो और इसके साथ चैलेंजेस भी हैं, जैसे इम्पर्मानेंट लॉस एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और आप एक्सचेंज रेट कैसे मैनेज कर रहे हो, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इन सब चीजों के लिए आप डिफरेंट आपको डेक्सेस चाहिए जो सिर्फ ऐसे यील्ड बेयरिंग एसेट्स को केटर करते हैं, ऐसे लिक्विड स्टेक्ड एसेट्स को केटर करते हैं। एंड वो अब हम बना रहे हैं इस इकोसिस्टम में, राइट? Okay, Abhitej, so we spoke about couple of things. So of course जो Ethereum पे लेके जा रहा है, so that goes on Ethereum chain. I believe that even if I click on the Binance, that will take me to the Binance chain, right? So whatever asset I'll stake, it will go on the Binance chain, right? Let's say if I want to stake something on Cosmos chain, so what option do I select? Is that live right now? And can you also in brief tell us कि अभी what is possibilities on persistence right now? क्या क्या लाइव है ताकि लोग कैन गो एंड ट्राई? या सो अभी परसिस्टेंस जो है वो एक बेस चेन है जहां पे आप मल्टीपल प्रोटोकॉल्स बना सकते हो। एंड परसिस्टेंस ने एक लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल बनाया है जिसका नाम है pStake। pStake एज ऑफ नाउ फंक्शनली आप बात करें तो वो इथेरियम पे है और बाइनेंस पे है। अब pStake जो है वो नेटिवली परसिस्टेंस चेन के ऊपर भी लॉन्च हो रहा है, जो कि कॉस्मोस एसेट्स को सपोर्ट करेगा। वो जैसे अभी लाइव कि नहीं है फिलहाल। वो हम लाइव कर रहे हैं और नेक्स्ट मंथ, हाँ। एंड जस्ट कंफ्यूज नहीं करना चाहता कि वो पहले Exactly, इथेरियम इम्प्लीमेंटेशन exactly. था यार, इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी pStake जो है वो परसिस्टेंस चेन के ऊपर लाइव जा रहा है। सो परसिस्टेंस तो चेन है, परसिस्टेंस कोर 1 चेन है, उसके ऊपर pStake है। pStake अभी जो परसिस्टेंस के ऊपर लॉन्च होगा वो कॉस्मोस एसेट्स को सपोर्ट करेगा, जैसे एटम हो गया, एक्सपीआरटी हो गया, ऑस्मो है, ऐसे करके जैसे मल्टीपल जो कॉस्मोस एसेट्स हैं उनको सपोर्ट करेगा। लोग वेरी सून अपना एटम स्टेक कर पाएंगे pStake के साथ। उसके अलावा परसिस्टेंस पे इन नेक्स्ट मंथ और सो क्या है कि हम वी हैव बीन वर्किंग विद मल्टीपल टीम्स, वो अपनी डैप्स लॉन्च करेंगे जो कि इन एसेट्स को सपोर्ट करेंगे। सो बेसिकली आपके पास जो कॉस्मोस एसेट्स हैं जो स्टेक रिप्रेजेंटेटिव हैं, लिक्विड स्टेक्ड एसेट्स हैं, आप क्या कर पाओगे, आप परसिस्टेंस चेन पे जब आते हो आप pStake यूज कर पाओगे, आप pStake के थ्रू स्टेक कर पाओगे, फिर आपको एक स्टेक्ड टोकन मिलेगा। अब ये स्टेक टोकन जो डेक्स हैं, मनी मार्केट्स हैं, इन पे लेके जा सकते हो। एंड सो बेसिकली आप डीफाई में ले जा सकते हो उसे। एंड मोर थिंग्स दैट वी आर डूइंग इज क्रिएटिंग टूलिंग। सो जैसे कि अभी जो चीजें लाइव है, जैसे परसिस्टेंस पे ऑलरेडी अगर आप स्टेक कर रहे हो परसिस्टेंस के साथ तो आप यील्ड मॉस यूज कर सकते हो। यील्ड मॉस क्या है कि अलाउ करता है कि आप अपने रिवॉर्ड्स को एक्युमुलेट करते रह सकते हो, एक स्ट्रैटेजीज बना सकते हो कि इस पीरियड में है। दूसरी चीज है कि आप अगर आज एक्सपीआरटी एक्वायर कर रहे हो तो आप जाके उसे ऑस्मोसिस में यूज कर सकते हो, जो कि एक दूसरी आईबीसी चेन है। जो डेक्स है आप उस इकोसिस्टम में यूज कर सकते हो, आप इंजेक्टिव में लेके जा सकते हो, आप मल्टीपल अदर जो एप्लीकेशंस हैं उसमें एक्सपीआरटी ले जा सकते हो, वहां यूज कर सकते हो। अभी है, बट आज से एज ऑफ व्हेन वी आर स्पीकिंग टुडे
it's in 16 September, I think so 16 October तक बहुत सारी एप्लीकेशन कॉस्मोस इकोसिस्टम में जो है, प्लस यू विल हैव ऑन परसिस्टेंस चेन ऑल्सो जो आके आप यूज कर पाओगे. सो अल्टीमेटली 1 month में आप परसिस्टेंस में आ रहे हो, आपकी एंड टू एंड स्टेकिंग जर्नी and DeFi utility covered only, which we talk about. Persistence is a chain where you're not only issuance of liquid staked assets happen, but also deployment. So आप किसी भी staker की जो end-to-end journey है, from staking your assets, getting a stake representative, using it in DeFi, accumulating more yield on it, getting more utility on it, वो सब possible हो पाएगा. And you just need to be in persistence chain. That's it. Awesome. Now मेरे को और भी चेंज की बात करनी है on Cosmos. So first thing, is it fair to say that a couple of chains that I've been hearing a lot about, Juno network, Osmosis, right? Yeah. So and Persistence, of course. So Juno and Osmosis and Persistence, they are sovereign chain, just like Binance chain, and right, they are just built with the Cosmos SDK. Is that right? So this is one part of Cosmos where you can go ahead and build an individual sovereign blockchain, right? That is one. Yes. Can you give us example of few apps which are built on Cosmos itself? They use Cosmos native token? So basically Cosmos जो हब है उसकी विजन क्या है कि वो बिटकॉइन जैसे बनना चाहता है. अभी जो नई विजन है कि कॉस्मोस हब पे जो कॉस्मोस चेन है, नेटिव चेन है जहां एटम सिट करता है, उसके ऊपर कभी कोई एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, वो कभी हैवी नहीं होनी चाहिए चेन, और वहां पे आपके अटैक वेक्टर्स नहीं बनाने. कॉस्मोस हब क्या काम करेगा, और ऑलरेडी काम करना स्टार्ट कर दिया, एक फीचर आ रहा है जिसका नाम है इंटरचेन सिक्योरिटी. इंटरचेन सिक्योरिटी क्या एनेबल करेगा कि आप कॉस्मोस हब में, अब कॉस्मोस हब की स्टेक्ड वैल्यू ही दो बिलियंस में है. सो क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्मोस स्टेक्ड है, इसका मतलब क्या है कि उसकी सिक्योरिटी बहुत हाई है. अब आप क्या कर सकते हो, आप एक सेपरेट चेन लॉन्च कर सकते हो जो जिसपे कोई वैलिडेटर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बट आप क्या कर रहे हो, पूरी सिक्योरिटी जो है वो कॉस्मोस हब से बोरो कर ले रहे हो. सो आप एटम स्टेक करके आप वहां से कॉस्मोस हब की सिक्योरिटी जो है वो ले रहे हो. सो इसको बोलते हैं इंटरचेन सिक्योरिटी. व्हाट ये क्या अलाउ करेगा कि एटम बेसिकली एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी पैरामीटर बन जाएगा पूरे इकोसिस्टम में. एंड इन चेन्स को नाम दिया गया है कंज्यूमर चेन्स. सो कंज्यूमर चेन्स पे एप्लीकेशंस बनेंगी. सो अब ये चेन होंगी, इन चेन्स पे आप अलग अलग तरीके की कंज्यूमर चेन्स बन सकते हैं. एक कंज्यूमर चेन बन सकती है जिसपे सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट प्लेस है, एक हो सकती है एनएफटीज के लिए मार्केट प्लेस है, एक है जो डीफाई के लिए कंज्यूमर चेन है, एक है जो लिक्विड स्टेकिंग के लिए कंज्यूमर चेन है. बट ये क्या कर रहे हैं, हब से बोरो कर रहे हैं सिक्योरिटी. सिमिलरली ऐसे भी हो सकता है इन फ्यूचर में, ऐसा हो सकता है कि एक नया कॉन्सेप्ट है मेश सिक्योरिटी. हो सकता है कि आप एक चेन रन कर रहे हो, आपको अपने वैलिडेटर्स नहीं चाहिए, आपको अपनी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, बट आप मल्टीपल कॉस्मोस हब से कनेक्ट हो जा रहे हो. क्या परसिस्टेंस से भी आपने सिक्योरिटी बोरो कर ली, आपने कॉस्मोस हब से भी सिक्योरिटी बोरो कर ली, आपने जूनो से भी कर ली, आपने ऑस्मोसिस से भी कर ली. अब आप क्या कर रहे हो, रेदर देन पूरी वो सिक्योरिटी स्क्रैच से बनाने के लिए अपनी चेन के लिए, आपने 4 चेन्स जो बहुत एस्टैब्लिश्ड हैं, बहुत स्टेक वैल्यू है उनपे, आपने उनसे सिक्योरिटी बोरो कर ली. इन रिटर्न आप क्या कर रहे हो, सो अगर आपका कोई टोकन है या जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है आपकी चेन के ऊपर, part of that will actually be given back into community pools of these chains, so that stakers of these chains are benefited, or the growth of these chains is also benefited. So Cosmos हब की ये आइडियोलॉजी है अब कि वो ये हब बनना चाहते हैं जो एक सिक्योरिटी सेंटर बन जाएगा. Atom will play a very crucial role, same as Bitcoin plays, and वो security wise हो जाएगा. And of course, then you will have utility for Atom in all these different ecosystems. But Atom chain का जो काम है वो सिर्फ एक infrastructure support provide करना बन जाएगा. And that is very बहुत visionary है, क्योंकि it takes a lot of time to say कि आप अपनी चेन के ऊपर यूटिलिटी नहीं बनाओगे, राइट, बट इकोसिस्टम बना रहे हो आप पूरा.
And yeah, This and is Juno and Osmosis yeah. come up. Yeah. No, so I'll come back to this. So this is why like काफी लोगों को ये थोड़ा difficulty होती है because Cosmos has taken a different approach altogether, right? Yeah. Now I am telling you, 90% people in crypto, they do not know that all 90% of these blockchains are built by Cosmos SDK, and they all can connect through IBC, right? Is there an option, or like does it come by default, or is there an option? Because I believe with Polkadot there is an option. I think we are diverting a little bit, but with Polkadot you have to rent a relay chain or something like this. So with this Cosmos, let's say if I'm building a certain blockchain, like do I have to choose it, or is it by default that I can talk to other blockchains by default? So basically IBC जो फीचर है वो आपको enable करना पड़ता है. अच्छा. By now it's default in persistent, like जैसे persistence SDK है उसमें वो default हो गया क्योंकि we very closely link with Cosmos SDK, right? ऐसे ही सबकी अपनी अपनी SDK है, वो लिंक कर देते हैं. जो भी चेन आज यूज कर रही है Cosmos SDK वो IBC enable कर सकते हैं. आप जब IBC enable करते हो बेसिकली क्या कर रहे हो, आप अपनी चेन को बोल रहे हो कि हाँ आपके आप दूसरी चेन के साथ इंटरेक्ट करोगे, पर दूसरी चेन के इंटरेक्ट करने के लिए आप क्या बनाते हो, आप रिलेइंग चैनल्स बनाते हो. सो बेसिकली आप एक चैनल क्रिएट कर रहे हो दूसरी चेन के साथ. सो जैसे जैसे आप चैनल क्रिएट करते जाओगे आपके IBC नेटवर्क बढ़ता जाएगा, राइट? एंड अगर आप अपने उस पे जाएंगे mintscan.io एंड स्क्रीन करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ मैप ऑफ जोन्स कुछ भी आप खोल सकते हो कि कितनी सारी IBC चेन्स है, राइट? एंड बहुत सारे हब्स हैं, जैसे परसिस्टेंस हब है, ऑस्मोसिस हब है, या कॉस्मोस हब इटसेल्फ है. ये बहुत सारी चेन से कनेक्टेड है. कुछ ऐसे हब्स हैं जो कि यहाँ चेन्स हैं जो कि सिर्फ एक एक उससे ही कनेक्टेड है, एक एक चेन से कनेक्टेड है. सो एक बेसिकली एक पूरा एक वेब बन गया है. तो ये बाय डिफॉल्ट आप आज इनेबल कर सकते हो, बट आपको ऐसे एक तरीके से है कि जब आप एक फंक्शन आपको डालना है और वो बोलना है कि हाँ आज से हमारी चेन IBC इनेबल्ड है. बट जो पहले बनी हुई है कॉस्मोस SDK से, जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया है, उनको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, उनको अपना कॉस्मोस SDK अपग्रेड करना पड़ेगा. या फॉर एग्जांपल जैसे पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन टुक टेंडरमेंट एंड क्रिएटेड लाइक उसके ऊपर एडिशन करके उन्होंने पेपरमिंट बनाया, राइट? जो कि उनका solution था. So basically what they've done is they have moved away from the native implementation. For those chains to do it, they will have to again like form another method of connecting with these chains, right? Same as with BNB. BNB has moved away from the core Cosmos SDK or core Tendermint solution. So they will also have to now work in building that almost like पहले एक bridging or like एक टेक्नोलॉजी ब्रिज गैप करना पड़ेगा, राइट? कि जहां पे कॉस्मोस SDK बहुत आगे बढ़ गया है, या लाइक BNB चेन अभी अलग इंप्लीमेंटेशन कर रहा है, उसके बीच में उनको बेसिकली या तो एक ऐसा एक प्योर कॉस्मोस SDK हब बनाना पड़ेगा अपने उस इकोसिस्टम में जो कि कॉस्मोस से कनेक्ट हो रहा है, एंड फर्दर फिर बाइनेंस चेन से कनेक्ट है. सो एक तरीके से एक रिलेइंग हब हो गया है. सो ये कुछ फीचर्स हैं. So on this screen, Abhitej, can you see the screen? Like you said कि यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि that, like for example persistence, it is not important that it is not necessary that it has to connect with all the other chains on Cosmos. It can just choose to connect with Juno maybe, or maybe Stargaze, right? Is that right? So can I check here like which chain is connected to how many chains here? Is there a screen here? Yes. So I think so it's best that you go to map of zones. आप map of zones type करिए, MAP of zones, just map of zones. Okay. हाँ, यहाँ पे क्लिक करिए. ये map of zones जो आप फर्स्ट रिजल्ट आया आपके यहाँ, ये फर्स्ट रिजल्ट ही है, आप क्लिक करिए इस पे. So base अभी भी लोड हो रहा है, बट आप जैसे फॉर एग्जांपल आप परसिस्टेंस पे जाइए, आप किसी भी एक चेन पे क्लिक करेंगे, आपको पता चल जाएगा वो कौन कौन सी चेन से कनेक्टेड है. फॉर एग्जांपल जूनो या ऑस्मोसिस पे कनेक्ट करिए. हाँ, सो देखो ऑस्मोसिस, हाँ ओके, क्लिक ऑन. सो क्लिक करिए. यहाँ पे भी देखो कॉम्प्लेक्स
एक कॉम्प्लेक्स है, राइट? ओके, गो या टू डिटेल्स, राइट? अब आपको वो कॉन्डेक्स की डिटेल्स दे रहा है, बट अब जैसे ही आपने वो क्लिक किया था ऑस्मोसिस पे अच्छा, ऊपर एक्चुअली, अब जैसे ये पूरा मैश है राइट, अब आप सिर्फ ऑस्मोसिस को देख रहे हो अभी। सो ऑस्मोसिस जिन चेन से कनेक्टेड है ओके। उस पे लिंक आ रहा है। बट अब जब जैसे हटाओगे सारा नेटवर्क अच्छा आ अच्छा जाता अच्छा, है, मतलब यहाँ से सिलेक्ट करना है, सॉरी, नीचे यहाँ से सिलेक्ट करना है क्या? कहीं से भी ओके। आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, ऊपर से सिलेक्ट कर लीजिए, कहीं से भी करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ओके, कौन कौन सी चेन से कनेक्टेड है वो लेट मी। जो नेटवर्क्स आएंगे। फॉर मैं एग्जांपल जैसे परसिस्टेंस पे क्लिक कर रहे हैं या जूनो पे क्लिक कर रहे हैं, तो अभी जैसे एवमॉस का दिखा रहा है, करेक्ट जैसे करेक्ट एवमॉस करेक्ट। के सारे चेन्स हैं। So can I also search it? I'm looking for persistence. Yeah, it's here. परसिस्टेंस ऊपर है, मिल या गया मिल गया। परसिस्टेंस है। So इतने चेन से कनेक्टेड अब है, आकाश कॉम्प्लेक्स, या इज दैट राइट? या आइरिस क्रिप्टोलॉजी, से कनेक्टेड है, सिर्फ चेन से crypto.org है, क्या बात है। सेंटिनल, कॉस्मोस हब, रीजन, इंजेक्टिव, एक्सएलआर, ग्रेविटी ओके, ब्रिज। ओके, या अमितेश, आई जस्ट वांट टू शेयर कि जो लोग भी देख रहे हैं, आई एम टेलिंग यू दिस इज अ वेरी न्यू इन्फॉर्मेशन। काफी जो भी, आई एम श्योर कि ये पहली बार आप देख रहे हो, बिकॉज इवन आई एम वाचिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड दैट्स बिकॉज कॉस्मोस चेन की उतनी बात नहीं होती है, उतना डिस्कशन नहीं होता, उसके इकोसिस्टम में क्या बिल्ड हो रहा है उसके बारे में बात। दिस इज सो फैसिनेटिंग, जहाँ पे हम लोग, यू कैन लिव इन ए इंटरचेन वर्ल्ड एंड स्टिल बी कनेक्टेड, like you can live in a multi-chain world and still be connected, right? So this is absolutely mind-blowing, yeah. And okay, this is what I want to talk about, another one, like इतने सारे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, is this fair to say they are all sovereign chain on built on Cosmos, and यस right? It's fair to say, okay. या So let's talk about this, okay, which is, I think there is a huge confusion on this, which is what's the difference between, so if I have to say कि ये Cosmos का ecosystem है, so for example Ethereum का ecosystem is easy, okay, DeFi में जाओ, ये अभी बना है, ये बना है, NFTs, okay, OpenSea and all that. What do I call Cosmos ecosystem? Should I count Binance as a Cosmos ecosystem or not? Like, or should I only count like Cosmos Hub, or is there a difference between the two? I think so. Like if you have to broader talk about which are the chains that are leveraging Cosmos technology, then of course BNB chain, OB chain, OKC, all of them are included. Even like things like Polygon are included because they leveraged Cosmos technology initially. But when you talk about Cosmos ecosystem, I think so it's like more niche. It's about saying which are the chains that are contributing or leveraging Cosmos SDK in its form, like it's in its recent form, and are very closely aligned with the Cosmos Hub and Cosmos technology, right? And then, for example, which are the chains supported by Cosmos wallets? So, for example, Kepler and things like. I think that comes as the Cosmos ecosystem. More and more, I think so. Cosmos ecosystem definition is becoming IBC enabled chains. Correct. The which we now term more popularly as IBC gang. So IBC gang में जो chains हैं जो आपने Makes मैप ऑफ sense. जोन में देखा, वो कॉस्मस इकोसिस्टम हो गया, राइट? अब कॉस्मस इकोसिस्टम में क्यों ये बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि एक टीम रन नहीं करी है लाइक सारे इकोसिस्टम को, या फिर ऐसा नहीं है कि एक ही हब पे आपको सब कुछ मिल रहा है, आप लाइक एक ही हब पे आपको सब कुछ करना है, और हर कोई ये पुश कर रहा है कि नहीं नहीं जी आपका एप्लीकेशन बनानी है, आप सिर्फ हमारी इकोसिस्टम पे बनाओ और हमारा एसेट मूव नहीं करे। ऐसी फिलॉसफी नहीं है। फिलॉसफी ऐसे है कि हमें सबके साथ काम करना है, राइट? फॉर एग्जांपल XPRT जो है उसके पूल्स जो है वो ऑस्मोसिस पे हैं, राइट? आधी यूटिलिटीज किसी और चेन पे हैं। ऐसे फ्यूचर में लाइक हम एटम को लिक्विड स्टेकिंग सपोर्ट कर रहे हैं, वो जो परसिस्टेंस पे है। आप लिक्विडेशंस कर रहे हो, आप कुछ जीरा पे कर रहे हो। सो आप क्या कर रहे हो कि बहुत पॉजिटिव सम गेम के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, जहां पे सारी चेन्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं कोई एक यूनिक यूटिलिटी बनाने में। तो ये विजन होगी, एंड इसलिए मैं बोला कि कॉस्मोस का ब्यूटीफुल पार्ट क्या है कि आप एक नीश पकड़ सकते हो और उस पर चेन लॉन्च कर सकते हो। एक और क्वेश्चन आपका जो मैं आंसर करना चाहता हूँ कि डिफरेंस क्या है पोल्का डॉट और
कॉस्मोस में आपको चेन स्टार्ट करने के लिए किसी को पे नहीं करना है, True. आपको ऑक्शन में नहीं जाना है, आपको वेट नहीं करना है कि आपको लाइक 10 साल की आपको ऑक्शन की वेटिंग है, ऐसा नहीं है। आप आज अपनी कॉस्मोस चेन लॉन्च करना चाहते हो, लाइक देयर आर टीम्स जो एक हफ्ते में अपनी कॉस्मोस चेन लॉन्च कर देते हैं, एंड बिकॉज एंड ये इसलिए है क्योंकि सारे डेवलपर्स बहुत सपोर्टिव हैं, आपके पास इतना कुछ बना हुआ है, आप कॉस्मोस हब से कुछ चीजें ले रहे हो, बट अब ऑस्मोसिस ने क्या किया है कि उसको इवॉल्व कर दिया है, परसिस्टेंस ने कुछ चीजों को इवॉल्व कर दिया, आप ऑस्मोसिस से उठा लो, आप परसिस्टेंस से उठा लो, सो ऑस्मोसिस से आप उनकी इनोवेशन जो उन्होंने से चेन सिक्योरिटी पे किया है, कॉजम वॉजम पे किया है, वो ले आओ, आप परसिस्टेंस से लिक्विड स्टेकिंग मॉड्यूल ले आओ, आप किसी और चेन से कोई और मॉड्यूल ले आओ, तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली यू आर ब्रिंगिंग द बेस्ट ऑफ ऑल चेन्स, क्योंकि सब सिमिलर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, आप एक स्टैक में डाल सकते हो और अपनी चेन लॉन्च कर सकते हो, यू डोंट हैव टू पे, एंड इकोसिस्टम हेल्प कर रहा है आपको सब। तो आप आईबीसी से जैसे कनेक्ट करते हो, आप रिलेयर्स बना सकते हो दूसरी चेन्स के साथ, फिर उन इकोसिस्टम्स में अपनी यूटिलिटी क्रिएट कर सकते हो, इन केस आपको ऐसा लग रहा है कि आप बूटस्ट्रैप नहीं कर सकते हो एकदम लिक्विडिटी या कुछ चीज अपनी चेन पे, पर आप अपने एसेट के लिए लिक्विडिटी कर रहे हो। सो this philosophy, I think so, it's still going to take a little bit time for people to digest कि positive sum game कैसे होता है, like I've never Yeah. seen somebody in Cosmos जो like there is not this Cosmos maximalist philosophy नहीं है, like I've seen Cosmos folks being so appreciative of other ecosystems as Solana, other ecosystems as Ethereum, other ecosystems as Avalanche, and always the vision is like, okay, hey, what we can do to connect better, or should we have like an IBC bridge, so what innovation can be done on both chains to connect, right? So that is, I think so, is a beautiful part. So Abhitej, now मैं use कर रहा हूँ Kepler wallet. Okay, I'm using Kepler wallet. I used on couple of blockchains. Like these are the wallets that one can use, right? With Cosmos. Yeah. Like what are any favorites you want to pick up? And then I want to move on to the next question. Kepler is one. What else would you suggest? Math? Cosmos Station. Cosmos Station. Cosmos Station, I think so. Achha. Okay. Perfect. And so we spoke about Persistence, of course, which is specializing in building this liquid staking features. What are the other protocols that comes in your mind when you talk about Cosmos, which are doing good? For example, Juno and other. I know you mentioned like Osmosis and Juno. Can you give us like brief what they're doing, just like 2 minutes, and what they are doing, and any other protocol you can think of? For example, Osmosis is a DEX chain or DEX protocol. So Osmosis itself is an application that sits on Osmosis chain, Osmosis DEX, and they are creating multiple ways and like utilities around leveraging the utility of this DEX, right? So multiple applications now that are building on Osmosis chain can use this ऑस्मोसिस डेक्स लिक्विडिटी इन फॉर्म्स आप यहाँ के एलपी टोकन्स जाके एक बोरिंग लैंडिंग प्रोटोकॉल में डाल सकते हो, एक वॉल्ट में डाल सकते हो जहाँ पे आपको यील्ड मिलती रहे, या बेस्ट लाइक एक यील्ड में आपने अपने एसेट्स डाल दिए जो ऑस्मोसिस के ऊपर मल्टीपल पूल्स में डाल रहा है और यील्ड कर रहा है। सो बेसिकली ऑस्मोसिस क्या बनाना चाहता है, एक तरीके का डीफाई हब बनाना चाहता है जो जिसका बेस ऑस्मोसिस डेक्स है, right? So ये osmosis की vision है, and I think so osmosis by far so far I've seen so many other ecosystems, so many dexes, is the most user friendly dex. It's so beautiful, like आप एक बार use करना start कर दो, आप दूसरे dexes पे जा ही नहीं सकते क्योंकि इतना complicated and things, and UI UX is beautiful. The technology wise जो osmosis कर रहा है, that's great, right? Similarly, if you look at Juno smart contract chain है, so एक कॉस्मोस एस्टिक है जो गो पे है, उसके ऊपर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिख सकते हो डायरेक्टली, सो एक अदर मॉड्यूल है या एक तरीके से लेयर मान लीजिए, उसे बोलते हैं कॉजम वॉजम लेयर। ये कॉजम वॉजम लेयर जो है वो रस्ट में है, सो आप कॉजम वॉजम के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हो। सो कॉजम वॉजम क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लैंग्वेज है। अब जूनो क्या प्रोवाइड कर रहा है, जूनो एक चेन है जिसपे आप मल्टीपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रन कर सकते हो। सो बेसिकली वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेन है। सो आप बेसिकली वेरी सिमिलर टू जैसे इथेरियम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेन है, राइट? आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन करें, सिमिलरली आप जूनो चेन पे मल्टीपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन कर सकते हैं।
So ये Juno है. I think so. Other interesting use cases that come to me, which are like would be a little different from what people hear, is Akash Network है. हाँ आकाश नेटवर्क क्या है कि क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट प्लेस है. आप के पास अगर एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं आप पुट इन कर सकते हो एंड लोग उस पे को रेंट आउट कर सकते हैं. लाइक अगर मेरे को आज वेबसाइट एक रन करनी है, रेदर देन मैं अपना पूरा से AWS सेटअप करूं, उस पे रन करूं, एंड वो बहुत एक्सपेंसिव है, रेदर देन मैं आकाश नेटवर्क यूज करता हूँ जो कि बहुत ही चीप. आई थिंक सो इफ यू स्टिल गो देयर, लाइक इन फ्यू आकाश यू कैन रन योर वेबसाइट फॉर मंथ्स and in few dollars, right? So it is basically क्या कर रहा है वो, आप एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे सब लोग अपना पुट आउट कर रहे हैं, एंड अगर मेरे को आज रिसोर्सेज चाहिए तो मैं आकाश पे करके वो रिसोर्सेज ले रहा हूँ, जो भी मेरे को जितनी कंप्यूटिंग पावर चाहिए. सो आकाश नेटवर्क है जो कि सिर्फ क्लाउड कंप्यूटर पे फोकस्ड है. कुछ जीरा आ रहा है जो लिक्विडेशन पे फोकस्ड है. ऐसे करके लाइक मल्टीपल चेंज. इंजेक्टिव है जो कि बेसिकली एक्सचेंजेस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंजेस आप वहाँ क्रिएट कर सकते हो. So a lot of like exchanges are focused on that. There are chains like Comdex which are creating like commodity trading, like focused on commodity trading, and so like commodity trading assets like synthetic assets, bonds to commodities के around है, or like synthetic commodities जैसे oil, petroleum, ये सब उनके लिए use cases create कर रहे हैं. And so ऐसे करके बहुत सारी like different chains हैं, and like I can go for hours to talk about each chain because it's like so much happening and each chain has its own unique value. So ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ ये तो जी बिल्कुल सेम ऐसे है, ऐसा नहीं है. like हर chain अपने में यूनिक है, अपने ना अतरंगी है. Cosmos ecosystem बहुत अतरंगी है, बहुत अतरंगी है. I would 100% say this. I'm telling you, people need to like really spend time because it's different. It's not complicated. It's just different from what you have known so far, and that is why it's अभी बिटकॉइन और फिएट, राइट? कोई बिटकॉइन इसको कौन बैकअप कर रहा है? It's just different. It's not difficult. If you understand, like somebody जो बिटकॉइन के बारे में समझेगा उसको फिएट समझ में नहीं आएगा, बोलेगा what is going on here? Somebody can print money, right? Like so weird, right? So it's just different. अच्छा, दो चीजें और मेरे को पूछनी है. The first is you spoke of course about some of the protocols on Cosmos. ये जो sovereign blockchains and maybe some other apps also, are they doing airdrops? Because Ethereum कितने सारे बारिश होती रहती है airdrops की. यार कॉस्मोस में आई थिंक सो एयरड्रॉप्स का सीजन तो पिछले एक साल से चल रहा है और बढ़ते ही जा रहा है क्योंकि नई कॉस्मोस चेन्स आ रही हैं. अब ये सारी चेन और कॉस्मोस में एयरड्रॉप करना बहुत आसान हो गया आईबीसी की वजह से. आप बस एसेट्स पिक कर सकते हो और बस ड्रॉप कर सकते हो क्योंकि डायरेक्टली उनके वॉलेट में चले जा रहा है. सो उनके एटम वॉलेट में चले जा रहा है, उनके ऑस्मोसिस वॉलेट में चले जा रहा है, उनके परसिस्टेंस वॉलेट में चले जा रहा है डायरेक्टली. सो बहुत सारे एयर ड्रॉप्स हैं. आई थिंक सो पीपल शुड लुक हार्ड एंड जिनको I would love to know because airdrop is one. So I'll be honest with you, like airdrop is one of the way to really get people use your product. I'm not, and it's good one. Why not? Like let's say if there's a protocol, there's a airdrop, people learn about this. Okay, there's an airdrop coming. Okay, let me know. And then once you get into it, okay, this is connected to here, this is connected here, this is connected here, this is it. So you get, you get to learn everything else. So in fact, maybe you can share with me some resources which are doing airdrops. I will look into them. The second thing is what's happening is, are there any somebody's building NFTs or NFT marketplaces? What's happening on that front? NFTs on Cosmos Hub. Are there teams who are building it? Yeah, so there are a chain specifically for NFTs. So Stargaze is one great example. Asset Mental is another, and these chains are basically curated for NFTs. So ये लोग जैसे Stargaze's uniqueness lies in their curation model, and they're launching and then NFTs having utilities because it's a whole ecosystem around it. It's not just a marketplace, right? So it's like now Stargaze NFTs can be used in other ecosystem in different ways. So in future you could see as आप ये एक इशू कर रहे हो स्टारगेज पे एक एनएफटी जो कि बेसिकली क्या गवर्न कर रही है कि और आप जितनी देर उसे होल्ड कर रहे हो गवर्न कर रही है कि आप क्या एक्शन ले रहे हो. या फिर एग्जांपल लाइक आप दूसरी चेन में पार्टिसिपेट करें, आप ऑक्शन स्टारगेज पे कर रहे हो बट आपकी चेन में जो एक्सेस लेने के लिए है वो आप इस
NFT को IBC के थ्रू ट्रांसफर करके यहाँ लेके आ सकते हो, राइट? सो और यहाँ पे एक्सेस ले सकते हो. सो ये अलग लाइक एक अलग मॉडल है बेसिकली, जहाँ पे आप पास दे रहे हो लोगों को एक यूनिक एक्सेस के लिए एक पर्टिकुलर चेन के लिए. ऐसी चीजें भी होंगी एंड ये करना आसान है क्योंकि IPC है. एंड so I think so people who want to look for NFTs, they should definitely look into Stargaze, Asset Mental. Yeah. So ये दोनों जो है Stargaze and Asset Mental, are they like sovereign blockchain? Like what are they? Yeah. Okay. Yeah, they're also sovereign blockchains. They're Focused for hubs, NFTs. basically, Okay, awesome. focused on NFTs. Yeah, that's awesome. You know what? I am actually going to try Persistence as soon as I will be able to stake Cosmos assets. Because right now, I believe Persistence can only help me stake Binance assets and Ethereum assets. Is that right? That is P-Stake, yeah. Protocol developed by Persistence, P-Stake, that can allow you to do Binance and this thing. But don't worry, as soon as it launches, I will definitely send you the link. And like and I think so is very common in Cosmos. Like community creates a lot of resources on how to do things. So definitely I will send you a proper guide also, which then you can further share with your community, which is like what you can do, how you can do it, and how to leverage these assets within Cosmos ecosystem. And yeah, I think so people who are looking to now explore like what unique things how you can do and are looking for better user experience, I think they should definitely look into Cosmos ecosystem and things that are happening. Some things are very unique. The other thing I think it's purely for developers, like developers who are looking to really now create their own applications in full like length of extent of things, where they want to do multiple things in future also on top of that application. They should also like, for them it's a great place to be in Cosmos. And I think the content creation, like I feel like content creators, because like I've been talking to folks that started really small, like they had like few tens followers. I'm not saying in the hundreds followers. They had like, 30, 40, 50 followers. Today, I see like the unique thing about Cosmos ecosystem is like, as I said, it's such a positive sum game. Content creators eventually become so embedded in the ecosystem that they start running validators. And they have their validators on multiple chains. Now, since the community believes so much in like they have been helping the community to learn about Cosmos, they start like, leveraging in other ways. So it's like Cosmos has so many content creators that don't really care about money. They're like truly there for content creation because they can earn money in other forms. And that's like, and now these people have like hundreds and thousands of followers, and these people are like going out and talking to folks from Solana, Avalanche, become so easy access and because like introduction. So I think the content creation people who are looking to create content about an ecosystem, Cosmos I think so still is where it's an underdog. And you always have a huge upside in supporting an underdog. So you start creating content about Cosmos, you eventually start feeling like so many people have started looping in because they want to know more about Cosmos. So like just two news have changed the stance for Cosmos. Like now everyone wants to learn about Cosmos. DYDX, when they announced that we are moving away and we are going on our sovereign chain, and then like entire Ethereum ecosystem started like looking into Cosmos and supporting it, right? Which is great. I think so. It's like mutual respect that is there is very insane. And the second is Delphi, right? Delphi saying now we have found our home in Cosmos. Now that has brought so much eyeballs. And now when it starts happening that ICS launches and you would not even have to launch a separate chain with validators, it will create another wave of things. That's like, people want to know so much about Cosmos, but it's not like so many people are covering about it. So the growth potential is high. You want to run a validator, you can start today with a small chain. You can grow into one of the biggest validators. I've seen so many validators that started with Persistence. Today are among top validators, not just in Cosmos ecosystem, but in other ecosystems also. And similarly, like you are a developer, the amount of growth that you have in Cosmos again is like insane. Like you can start learning about Cosmos today. In next
like 2 months, you could have your own chain which can have a very unique use case. And then you don't need to actually create utility for your assets on your chain. You could be connecting to other chains, right? Yeah. For example, Akash is a cloud computing chain. Now, they don't have to think about, they also have to focus on DeFi utilities of creation on their chain. They would always like partner with other chains to IBC, right? Like Osmosis. They want liquid staking, they would go to Persistence. They want like exchanges, they would go to Injective. So it's like that sort of allows the like a lot of visibility and options. So yep, I mean, yeah, this is yeah, absolutely. It's mind blowing, and you're right. I still remember that when DYDX announced that they are planning to build this on a sovereign blockchain, and the Bankless being the number one podcast for where these guys are like, oh, why are you going? Where are you going? Why are you leaving us? And it's like, no, I'm not leaving you. I'm still on Ethereum. It's just that I'll still be able to cater to Ethereum ecosystem, but it's just that I need more scalability and speed, right? So it's absolutely crazy. I want to thank you so much for your time, Abhitej. It's been awesome. And can you, before we wrap up, can you share where all people can follow you and what all people should? And I'll post those links in the description. I think so. To connect with me, one of the best places would be Twitter. I'm very active, generally check everything there. So it just says Abhitez Singh, Singh, that you can search. I think the best place to follow Persistence as well would be either Twitter or our Telegram community or Discord community. Twitter, we keep on sharing a lot of updates. You would see all different. So basically, if you go to Persistence One, which is Persistenceone, Persistence One, you would be able to see about the entire Persistence ecosystem, which is like Beefsteak, which is like other applications that are building within Persistence ecosystem. So I think so one place where people should go about Persistence should be Persistence One Twitter handle. Yeah, and you can always like interact with us on multiple platforms, always very active. And yeah, just like look forward to October. I think it's an exciting October coming ahead. I saw something on your what's happening. Is there an event happening? There are a few dates that you mentioned. Oh yeah, that is Cosmoverse. So Cosmoverse is a Cosmos conference. Where is this happening? It's happening in Medellin, Colombia. Okay. Pablo Escobar's city. I think so. That's how more people will resonate to it. Last year was in Lisbon. Last year was the first Cosmos conference in that fashion. This is the second year. In just 1 year, grown like, I think so last year 15, 16 protocols participated. I think so this time it's close to 120 protocols participating. So it's like, that's the scale at which Cosmos has grew just in 1 year. And I'm just still looking at pictures before going to this Cosmoverse from last Cosmoverse. It's like insane. Like last year it was like a event for 500 people. This time it's for like 2,000 people. And like people are still flying, like everyone wants to be there. Tickets sold out like as soon as it could. And this year it's going to be a lot more exciting because last year things were concepts. Things were still picking up. This year it's going to be a lot about where do we go next from here? Like everyone is coming in, but how do we like tap into more things? Like what's the next future? Because everything that Cosmos had lay out in their white paper and with their token, with their like they said we would want to do this is already done. Everything. It's like now the vision is about where do you take it from here? And that's what I'm saying. Like you're gonna have so many roundtables around how do like which like for example Persistence roundtable would be around how do we create this liquid staking hub where like you're bringing assets from other ecosystems also, like how that cross-chain communication is going to happen. People are talking about creating application layer for Bitcoin. People are talking about creating more sustainable growth of like these ecosystems, which is, as I said, like interchain security. How is that going to envision or mesh security is going to come?
Yeah, so I think a lot of brainstorming will happen at this event in terms of how you can take Yeah. this further. And I think this is similar to Ethereum's ETH Denver or some, right? Or Bitcoin Miami. We have costs. Yeah. Is that right? I mean, this is absolutely exciting. I hope to keep in touch with you, and it's been amazing. The call is going to end, but I really want to thank you for your time, and let's keep in touch. Thank And you as well. yeah, see you soon. Talk to you soon.